I hope I am audible to you. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. And today we are going to see the remaining part of your antiviral drugs. So that is nothing but the drugs used in the treatment of HIV or AIDS. So yesterday we have seen the antiviral drugs repeated. Okay, so actually the day before yesterday only we was discussing about the classification of that antiviral drugs and drugs used in the treatment of influenza or non-retroviral drugs. So today we will discuss the drugs which are used in the treatment of HIV and AIDS. So basically what do you mean by this HIV and AIDS? So it is a kind of sexually transmitted disease and also transmitted through various means. So it is a human immunodeficiency virus. The causative agent for AIDS is the disease and the causative agent is a HIV virus. So human immunodeficiency virus, which is commonly transmitted through a sexual intercourse or by so if any infected person is there and if you are in a contact with that infected person through a sexual means or by if you are using if you are using a syringe of infected person or needles of infected persons, or if you are taking a blood from infected person, right? These are the means to transfer HIV virus from infected person to a normal person. Human immunodeficiency virus, which is commonly transmitted through a intercourse or by contaminated syringe or needles or by blood transfusion or through a blood products. Also it is transmitted from a infected mother to a fetus during the pregnancy or during the lactation or breastfeeding or lactation. तो ये HIV AIDS जो है HIV virus human immunodeficiency virus that is transmitted to a normal person from infected person via either sexual contacts or by using of syringe needles infected with the virus or using blood transfusion from infected person, or it may transmit from mother to fetus, or it may be transmitted from a milk also. But this is not transmitted through a casual handshake. So if you are doing a handshake with a HIV patient, that will not transmit virus to you. It is not transmitted via aerial route, मतलब like जैसा TB होता है, tuberculosis is transmitted via droplet infection, but this is not by droplet. Now sequence of steps of infection, मतलब HIV वायरस आपके बॉडी में आ गया तो उसके सीक्वेंस क्या है, वो मल्टीप्लाई कैसे होगा, व्हाट आर द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हेन HIV वायरस इन्फेक्ट्स ए यूर सेल. ऑब्वियसली आपके अगर इसमें कोई भी इन्फेक्शन आ गया तो सबसे पहले आपके इम्यूनो सेल्स होते हैं, इम्यूनो सेल्स जैसे lymphocytes, T lymphocytes हो गए, they will go at a infection site, they will try to neutralize it. So what happens to this upon entry of a HIV virus in the body, this virus has a one outer capsid of this virus has a one glycoprotein known as a GP120 glycoprotein that binds to the CD4 receptor. CD4 receptor means it is a receptor present on the helper T cell. Helper T cell thymus derived lymphocytes, इसको अपन CD4 cell बोलते हैं, helper T cell. So upon entry of viral outer glycoprotein GP120 binds with the CD4 receptor on the surface of T lymphocytes. T lymphocytes or macrophages or monocytes or dendritic cell of brain. Now this is followed by
followed by binding virus to a chemokine receptor on the cell surface. तो chemokine receptor होते हैं CCR5 and CXCR4. These two chemokine receptors are present on the your helper T cell. Now first जो वायरस होता है उसका कैप्सिड होता है, उसमें एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है GP120, वो बाइंड करता है ना CD4 सेल के रिसेप्टर को, और बाद में है ना CD4 सेल के रिसेप्टर क्या है, ये केमोकाइन रिसेप्टर होते हैं. CD4 सेल के ऊपर एक CCR5 और CXCR4, these receptors are there. So this glycoprotein and these receptors will combine, then after that it will get entry into the cell, inside the cell. Attachment of above two receptors, attachment of above receptor, virus get fused with the cell, virus get fused with the cell, virus will get fused with the cell, and then after that there is the entry of the virus in the cell. So attachment of these receptor, the virus get fused with the cell via glycoprotein GP41, enters into the cell, and genetic material of virus, so genetic material of virus along with the reverse transcriptase, that is released. तो genetic material क्या है वायरस का, यहाँ पे it is the RNA virus. HIV virus is the RNA virus. So RNA will be released along with the reverse transcriptase. So what is reverse transcriptase? So it is the RNA dependent DNA polymerase, RNA dependent DNA polymerase, and other enzymes also activated. Now activation होने के बाद में क्या करेगा, ये सबसे पहले RNA का कन्वर्जन DNA में करेगा by using reverse transcriptase. So from single stranded RNA, so RNA is a single stranded, by using a reverse transcriptase enzyme, it will synthesize a complementary DNA, will make a DNA. Now at this stage, मतलब so soon after the entry of virus into the T cell, so your viral nucleic acid, that is RNA, will be released, and along with the reverse transcriptase and other enzymes. So reverse transcriptase will convert single stranded RNA, RNA single stranded RNA, that is converted into complementary DNA. तो RNA से DNA बनता है यहाँ पे by using reverse transcriptase. Now at this step mutation can occur which is responsible for the drug resistance in case of HIV virus. So virus will become resistant to the drug. It will modify, it will undergo mutations in this step. Okay. Now newly synthesized double stranded DNA get integrated. अभी जो वायरस ने RNA से DNA बनाया है वो DNA, now this DNA get integrated. Integration मतलब क्या, get mixed or get combined. Newly synthesized double stranded DNA get mixed with the host chromosome by the enzyme known as integrase. Integrase एक वायरस का एंजाइम होता है, वो क्या करता है, वायरस का DNA अपने DNA के साथ में मिक्सअप कर देता है, and from that integrated DNA again RNA is made, and from RNA proteins are made, right? Now proteins are assembled, and then so antigen or cytokinin will activate the cell and HIV replication will start, है ना. तो DNA बना है तो DNA क्या होगा, उसका replication होगा. तो antigen और cytokinin will activate the cell and HIV replication start using host DNA polymerase. तो आपका जो सेल का DNA polymerase है उसके हेल्प की, उसकी मदद से ये जो इंटीग्रेटेड DNA है उसका रेप्लिकेशन होगा, है ना. उसके बाद में उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, है ना, DNA to RNA बनेगा, एंड देन mRNA इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन्स, बाद में प्रोटीन बनाएगा बाय यूजिंग योर सेलुलर मशीनरी. तो ये वायरस सेल के अंदर आने के बाद में आपका न्यूक्लिक एसिड रिलीज करता है, RNA से DNA बनता है बाय यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और बाद में वो जो DNA बना है वो अपने ह्यूमन DNA के साथ में मिक्सअप होता है बाय यूजिंग इंटीग्रेज एंजाइम. बाद में उसका रेप्लिकेशन होता है, आइडेंटिकल कॉपीज बनते हैं, बाद में वो DNA से RNA बनता है, ट्रांसक्रिप्ट होते हैं उसको, एंड RNA से बाद में प्रोटीन बनेगा, है ना. नाउ दीज प्रोटीन्स आर नॉन फंक्शनल प्रोटीन और प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स, है ना, प्राइमरी ट्रांसलेट्स. नाउ दिस नीड्स सम मॉडिफिकेशन. दीज प्रोटीन्स after
synthesis. They are activated and they are assembled. They are assembled in a cytosol of host cell into viral nucleocapsid. Yeah, जैसे tail हो गया होता है. So okay, and then virus bud बनेगा, which is an inactive viral particle. Now this viral bud, yeah, this viral bud needs some modification. Soon after the process of budding, virus gets maturation, and for maturation there is one enzyme, viral protease. This viral protease enzyme has an important role in the maturation. Protease break down the large peptide into smaller functional peptide. जो पहला जो प्रोटीन बना है नॉन फंक्शनल, उसको फंक्शनल करने के लिए protease enzyme important. That's why protease is one of the target. Then integrase is also one of the target. Reverse transcriptase is also one of the target for anti-HIV. यहाँ पे 3 क्लास तो ऐसे आ जाएगी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, इंटीग्रेज इनहिबिटर एंड बाद में आपका प्रोटीज इनहिबिटर. ये 3 क्लास तो आया, वैसे ही आज समझ में आएगी आपको. Then again matured daughter virus will be released from the cell and it can infect another cell, right? This is how viruses multiply. Now, during the replication of viral nucleic acid, during the replication of process, CD4 cell develop a functional impairment. आपको जो कौन सा सेल को इन्फेक्ट करते हैं, ये टी लिम्फोसाइट को, उसको CD4 सेल बोलते हैं. तो वायरल रेप्लिकेशन प्रोसेस CD4 cells are develops functional impairment and patient develops a defect in the immunity, defect in the cellular arm of immunity. Now impaired cell mediated immunity makes a patient susceptible for opportunistic infection, है ना. तो इम्यूनिटी कम हो जाएगा, CD4 सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, इम्यूनिटी कम हो जाएगा. तो उसके कारण क्या है, दूसरा इन्फेक्शन आपको कैच कर सकता है. दूसरा इन्फेक्शन कौन सा, जैसे टीबी है, उसके बाद में आपका कैंडिडी अल्बिकन्स है ना, आरपी सिम्प्लेक्स है. तो पेशेंट डज नॉट डाई बिकॉज ऑफ द HIV, बट पेशेंट विल डाई बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी इन्फेक्शन लाइक ट्यूबरक्यूलोसिस, कैंडिडियासिस, herpes infection, pneumocystis, cryptococcal meningitis and CNS toxoplasmosis. तो HIV वायरस इन्फेक्ट करने के बाद में वो आपके इम्यून सेल जो है CD4 सेल्स या फिर हेल्पर टी सेल उसके बोलते हैं, तो उसको डिस्ट्रॉय करता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको इम्यूनिटी कम होता है. यूर सेलुलर इम्यूनिटी इज डिक्रीज्ड और कॉम्प्रोमाइज्ड, and that's why your body will become vulnerable for the opportunistic infections. So likewise your tuberculosis, candidiasis, herpes simplex infection, pneumocystis, then cryptococcal meningitis, CNS toxoplasmosis. So patient of AIDS will not die because of the HIV virus, so he will die because of the TB, because TB is the most common secondary or super infection that occurs because of the HIV virus. ठीक है. Initially antibodies for this virus, जैसे ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी रेजिस्ट नहीं करेगी. तो आफ्टर इन्फेक्शन initially your body will try to develop antibodies against the HIV virus. So antibody against the HIV virus will develop in a 2 to 8 weeks. Virus will be killed by cytotoxic T lymphocytes. ये जो T lymphocytes है वो वायरस को किल करेंगे, और जो इन्फेक्टेड सेल है, तो इन्फेक्टेड सेल विल अंडरगो अपोप्टोसिस, प्रोग्राम सेल डेथ, है ना. बट HIV वायरस का एक प्रॉपर्टी होता है, इट विल रिमेन डॉर्मेंट. द वायरस विल रिमेन डॉर्मेंट फॉर अ years after infection. So virus will remain in a dormant position after infection. So incubation period for virus is nothing but the 1 to 7 years. तो अभी इन्फेक्शन हो गया तो अभी इमीडिएटली आपको सिम्टम्स नहीं आएगा. इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 1 to 7 ईयर, 1 से 7 साल तक उसका इंक्यूबेशन पीरियड है. एवरेज होता है 4.5. पेशेंट में रिमेन एसिम्टोमेटिक कैरियर,
or few develop a short febrile illness and can infect other. उसको सिम्टम्स नहीं आएगा लेकिन इन्फेक्ट कर सकता है, आप दूसरे को इन्फेक्शन कर सकता है, तो असिम्टोमेटिक कैरियर. Yes, in the later stage or बाद में in the later stage there is a high rate of viral replication in the lymph nodes occurs, and that's why lymphoadenopathy with or without candidiasis or herpes zoster virus. The final stage patient will suffer from opportunistic infection like a TB or candidiasis or meningitis, genus toxoplasmosis. Repeated GI infections like Kaposki sarcoma, Burkitt lymphoma and non-Hodgkin's lymphoma. तो बाद में पेशेंट इन चीज़ों के कारण मरता है, जैसे टीबी या फिर कैपोस्की सार्कोमा होता है, कैंडिडियासिस होता है ना, उसको टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है, non-Hodgkin's lymphoma होता है. So no drug is currently available that can eradicate HIV. मतलब अभी कौन सा भी ड्रग अवेलेबल नहीं that can completely remove the HIV, but by using a combination of drugs viral replication load can be decreased. मतलब नंबर ऑफ रेप्लिकेशन वायरस की कम कर सकते हो, वायरल लोड कम कर सकते हो by using a combination of drug. Immunological status of patient can be increased, okay, and the onset of disease can be delayed. तो डिसीज के सिम्टम्स आने में उसको डिले कर सकते हो, एंड सर्वाइवल ऑफ पेशेंट कैन बी इंक्रीज्ड. तो ऐसा नहीं कि वो मरेगा, नहीं मरेगा, लेकिन क्या है कि आज मरने वाला है तो 4-5 साल के बाद में मरेगा. दैट कैन बी इंक्रीज बाय ड्रग. सो नो ड्रग दैट इज अवेलेबल टू करंटली which can eradicate AIDS or HIV virus completely, but obviously the replication load can be decreased, the immunological status of patient can be improved, and the onset of disease can be delayed, and survival will be prolonged. Now you can see over here, so this is a HIV virus, human immunodeficiency virus. This is known as the capsid, this is known as the capsid, and this is known as the tail. Now in the capsid of HIV virus you have a GP41 glycoprotein or GP120 glycoprotein, right? And in the this one is known as your helper T cell or CD4 cell. ठीक है, आपका CD4 cell और helper T cell. Now your CD4 cell has a chemokine receptor on the surface, CCR5. Now HIV virus, by using this GP41 glycoprotein or 120 glycoprotein, it will fuse with the host cell, will fuse with the host cell at a CCR5, chemokine receptor 5. Now after fusion, this will get enter into the cell. There is uncoating and release of RNA. So viral RNA will be released. Now virus में एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. तो वायरल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज will convert this single stranded RNA into double stranded DNA by reverse transcriptase. Now after getting a DNA, now this DNA is integrated with the human DNA. आपका human है ना, T सेल किसका है, CD4 सेल किसका है, आपका है, उसमें DNA होगा. तो वो DNA के साथ में वायरस का DNA जो बना है अभी वो कंबाइन होता है, मिक्सअप होता है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन. नाउ वायरल इंटीग्रेज एंजाइम विल इंटीग्रेट योर host DNA with the viral DNA. Now this integrated DNA is there. Now this is replicated, and after replication from DNA RNA is made, known as a transcription. From transcription RNA, from the RNA proteins are made, known as a translation. Now this is inactive protein or primary transcript and need to be modified by protease enzyme. ये भी viral का enzyme होता है, protease. Protease will modify and then it will activate the proteins. So after activated proteins, so tails are made separately. This capsid is made separately, and you have genetic and you have RNA also. So all they are assembled together, and then it is released out of the cell. Now this next virus is next
वायरल पार्टिकल इज रेडी टू इन्फेक्ट अनदर सेल। तो देखो पहले तो है ना GP41 हीमोकाइनेस मतलब 5 के साथ में कंबाइन होके उसका अटैचमेंट होता है ना, फ्यूजन होता है, बाद में पेंट्रेशन होता है, बाद में RNA का DNA बनता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मदद से, DNA का इंटीग्रेशन होता है बाय यूजिंग इंटीग्रेज, देन DNA का रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, RNA बनता है, RNA का बाद में प्रोटीन बनता है जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, और वो प्रोटीन को एक्टिवेट करता है प्रोटीएज, मॉडिफाई करता है प्रोटीएज, बाद में वायरल पार्टिकल के पार्ट्स सिंथेसाइज किया जाता है और असेंबल किया जाता है, और बाद में क्या बनता है आपका पूरा वायरस बनता है। राइट नाउ you have drugs which can affect this process step by step. For example, N4-viratide will prevent the attachment. N4-viratide will prevent the attachment. Miravirag also will prevent the fusion. Miravirag will prevent the entry. Miravirag will prevent the entry. Then nucleotide reverse transcriptase and non-nucleotide reverse transcriptase will inhibit the reverse transcriptase enzyme competitively and non-competitively respectively. बाद में this integrase inhibitors like raltegravir and irritagravir, they inhibit the integrase enzyme. After RNA is made, so then proteins are made. Protease inhibitors are up there. Protease inhibitors, they inhibit the protease and prevent the activation of protein. So, these are some targets for anti-HIV drugs. यही drugs देखेंगे अपन, चलो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. So anti-HIV drug or drug used in the HIV/AIDS, right? First class is nothing but the reverse transcriptase inhibitor. Reverse transcriptase inhibitor. So in that you have two classes. एक होता है नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर एंड एक होता है न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर. न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर that is a NRTI and NNRTI is a non nucleotide reverse transcriptase inhibitor. न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर को बोलते हैं अपन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर को बोलते हैं अपन नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर. आपको यहाँ पे ऐसा याद रखना है. न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में दो आता है. एक आता है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर. न्यूक्लियोटाइड साइड मतलब क्या होता है, दो पार्ट होता है उसमें. अमीनो शुगर है ना, न्यूक्लियोटाइड साइड में अमन जो उसमें नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, और न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोटाइड में आपका नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप होता है. न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर ज़िरोउडिन, स्टाउडिन, लेमिउडिन, ज़ैलसिटाबिन है ना, डिडायडेनोसिन, अबाकाविर, एम ट्राइस्टाबिन. एग्जांपल्स देखो, ज़िरोउडिन, स्टाउडिन, लेमिउडिन है ना. तो उडिन में ये तीन आता है ना, ज़िरोउडिन, स्टाउडिन, लेमिउडिन, देन ज़ैलसिटाबिन, देन एम साइट्राबिन, ज़ैलसिटाबिन एंड एम ट्राइस्टाबिन. ये ऐसा है ना. तो उडिन बीन है ना, सिन, उडिन बीन सिन, सिन को ने डिड एनोसिन है ना, और डाइडेनोसिन, देन अबाकाविर. नाउ इसमें न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर कौन है, टेनोफोबिन. नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में देखो इपावायरेंस एक होता है, एंट्रावायरिन, नेविरेपिन, देन डेलावेरिडिन एंड रिल्पावेरिन. डेलावेरिडिन, नेविरेपिन, इट्रावेरिन एंड इपावायरेंस. ये हो गए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है ना. अभी प्रोटीएज इनहिबिटर ये क्या है, एग्जांपल सेक्विनाविर, रिटोनाविर, इंडानाविर, नेल्फिनाविर, एम्प्रिनाविर, फोसएम्प्रिनाविर. अभी फोसएम्प्रिनाविर क्या है, इट इज द प्रोड्रग ऑफ एम्प्रिनाविर. लोपिनाविर, देन दारोनाविर एंड
टिरानाविर, टिप्रानाविर, darunavir, tipranavir. These are nothing but the protease inhibitor. Protease inhibitor. Now entry inhibitor जिससे अपन ने देखा है वहाँ पे miravirok and enfuvirtide, miravirok and enfuvirtide. Integrase inhibitor में reltagravir and ilvetagravir. इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर, ठीक है. चलो अपन देखते हैं इंडिविजुअल ड्रग्स. नाउ एंटी रेट्रोवायरल है ना, एंटीवायरल ड्रग्स, मतलब ये दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ HIV एड्स. पहले देखो एड्स क्या है, वैसे तो अपन ने देखा है शॉर्ट में, बट अगेन सो इट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन विद द इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. कौन सा? HIV वायरस. देयर आर टू टाइप ऑफ HIV वायरस. तो HIV वायरस के दो टाइप होते हैं, HIV1 ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस 1 and HIV2. There are two classes of drugs used in the AIDS, that is a reverse transcriptase inhibitors and protease inhibitors. Okay, these are two mostly used. Now highly active antiretroviral therapy, now उसको बोलते हैं HAART, HART, HAART, highly active antiretroviral therapy regimen contained. इसमें क्या होता है कि two nucleotide reverse transcriptase inhibitor combined with either non-nucleotide reverse transcriptase inhibitor और protease inhibitor. मतलब दो ड्रग कौन से? न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, और तीसरा कौन सा? एक तो नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर हो सकता है, या फिर प्रोटीएज इनहिबिटर, है ना. तो हार्ट रेजिमेन जो है इट विल सप्रेस HIV रेप्लिकेशन, है ना, एंड प्लाज्मा HIV RNA लेवल विल डिक्रीज और विल reduced and increases the patient survival. Resistance to this drug can develop because HIV has a high rate of mutation. HIV वायरस क्या है कि बहुत ज़्यादा म्यूटेट होता है, इसके कारण इनको रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है, होता है. अब पहला ड्रग देखेंगे अपन, न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर. न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, इसमें फर्स्ट ड्रग, they are the first drug that to be used in the HIV infection. उसका पहला ड्रग है ज़िरोवुडिन एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग. ये ड्रग ऑफ चॉइस भी होता है. फर्स्ट ड्रग है ना ज़िरोवुडिन. So first drug to be used in the treatment of HIV infection was a ज़िरोवुडिन. Mechanism of action क्या है इनका? So nucleotide reverse transcriptase inhibitor, they get converted into corresponding triphosphate derivative. Corresponding triphosphate derivative, you know, they are the product and which has a high affinity for the HIV reverse transcriptase enzyme. It is a specific to the HIV and required for DNA synthesis. तो क्या है mechanism इनका कि nucleotide reverse transcriptase inhibitor, they gets converted into the triphosphate derivative, corresponding triphosphate derivative, and they have a high affinity for the reverse transcriptase. इसको बाइंड करके इनको इनहिबिट करेगा. The reverse transcriptase is specific for HIV and required for the DNA synthesis. So non-nucleotide reverse transcriptase inhibitor, they are known as the nucleoside analog. ठीक है, न्यूक्लियोसाइड के एनालॉग होते हैं, and they competitively inhibit the reverse transcriptase, competitively inhibit the reverse transcriptase enzyme and terminate the DNA elongation. तो जब ये न्यूक्लियोसाइड एनालॉग होते हैं तो ये न्यूक्लियोसाइड के जगह पे ये वहाँ पे जाके बैठते हैं DNA सिंथेसिस में, और इनका जो पेंटो शुगर होता है उसके ऊपर जो 3' होता है वहाँ पे OH नहीं है ना. नॉर्मली न्यूक्लियोटाइड के ऊपर पेंटो शुगर के वहाँ पे 3' होता है ना, तो वो ये ड्रग के ऊपर नहीं होता. दैट्स वाई ये जाके बैठेंगे और वहाँ से टर्मिनेट करेंगे चेन, राइट. दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. नेक्स्ट वन इज ज़िरोवुडिन. तो ज़िरोवुडिन है ना, इसको ही अपन ज़िरोवुडिन को ही अपन बोलते हैं एजिडोथाइमिडिन. ज़िरोवुडिन को ही बोलते हैं एजिडोथाइमिडिन और AZT. It is a thymidine analog against the HIV and other retroviruses. Other nucleotide reverse transcriptase inhibitor कौन से है?
जैसे डायडेनोसिन, then zalcitabine, stavudine, lamivudine, abacavir are alternatively used in the patient with the AIDS. If you are intolerant to the zidovudine को टॉलरेंट नहीं है तो फिर बाकी है ना, मतलब इंटॉलरेंट है, zidovudine नहीं यूज कर सकते, रैश हो रहा है, स्किन रिएक्शन हो रहा है, तो दूसरे ड्रग्स कौन से फिर है ना, डायडेनोसिन, zalcitabine, stavudine, lamivudine and abacavir. Adverse drug reaction क्या है इनके? Bone marrow suppression, the most common adverse effect of zidovudine. बाद में nausea, myalgia, fatigue, insomnia, anemia. Now anemia is treated with the erythropoietin, है ना, ये क्या है? It is an enzyme responsible for the production of RBC. Neutropenia, which is treated with the neutropenia मतलब decreased neutrophils, treated with the GCSF or GMCSF. GCSF मतलब क्या? granulocyte colony stimulating factor. GMCSF मतलब क्या? granulocyte monocyte colony stimulating factor. So high dose can cause myopathy and neurotoxicity. Myopathy and neurotoxicity. Use क्या है इनका? So obviously they are used in the AIDS. So it is a drug of choice in the treatment of AIDS. Drug of choice in the AIDS. It will increase the survival rate of patient. तो सर्वाइवल रेट ऑफ पेशेंट बढ़ता है, डिक्रीज द डिसीज प्रोग्रेशन एंड प्रिवेंट द सेकेंडरी इन्फेक्शन, कैन बी यूज्ड इन द प्रेगनेंसी आल्सो, प्रेगनेंसी में भी यूज कर सकते हैं. zidovudine याद रखना है, ड्रग ऑफ चॉइस, क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है इसके ऊपर. zidovudine इज अ ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ HIV. नाउ नेक्स्ट इज अ नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर. नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर. तो नॉन न्यूक्लियोटाइड तो नॉन कॉम्पिटिटिव, न्यूक्लियोटाइड कॉम्पिटिटिव, याद रखना है. तो ड्रग्स लाइक नेविरेपिन, डेलावेरिडिन, इपावेरेंस, दे आर द and are the synthetic antiviral drugs. Nevirapine, डेलावेरिडिन, इपावेरेंस, they are the synthetic antiviral drugs. They are known as a non-nucleotide reverse transcriptase inhibitor. They will bind the reverse transcriptase enzyme directly. Directly they will bind, and they are not converted into triphosphate derivative. They will not convert into triphosphate derivative, and they will bring about the changes. They will bring about the changes in the enzyme, and hence they are known as a inhibitor. They will inactivate the enzyme. They directly enzyme को bind करते हैं, कौन से? reverse transcriptase enzyme को, and उसको inactivate करते हैं. So they are only effective in HIV-1 patient, human immunodeficiency virus 1. They are not effective in HIV-2 and other retroviruses. वो इफेक्टिव किसमें? HIV-1 में, HIV-2 और रेट्रोवायरस में अदर इफेक्टिव नहीं है. एडवर्स रिएक्शन क्या है? स्किन रैश, प्रोराइटिस, स्टीवनसन जॉनसन सिंड्रोम, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोसिस. अदर एडवर्स इफेक्ट लाइक हेडेक, ड्राउजीनेस, नाइटमेयर्स, confusion. बाकी nausea, vomiting, diarrhea, dizziness तो कॉमन. Then efavirenz is a teratogenic and contraindicated in the pregnant woman. Efavirenz प्रेग्नेंट वुमन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि ये टेराटोजेनिक है. नेविरेपिन ऑकेजनली कैन कॉज फ्लुमिनेंट हेपेटाइटिस. तो नेविरेपिन क्या करता है कि फ्लुमिनेंट हेपेटाइटिस मतलब हेपेटॉक्सिटी करता है. तो फ्लुमिनेंट हेपेटॉक्सिटी और कौन करता है? आपका एक ड्रग है, एग्जांपल है उसका निमेस्लाइड इन चिल्ड्रन, है ना. इसकी यूज क्या है? यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ HIV इन्फेक्शन इन कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग्स. नेक्स्ट क्लास है आपका प्रोटीएज इनहिबिटर. सेक्विनाविर इज द फर्स्ट ड्रग ऑफ प्रोटीएज इनहिबिटर. इसका मैकेनिज्म देखो. प्रोटीएज एंजाइम एक्टिवेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर वायरल एंजाइम्स लाइक इंटीग्रेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. तो प्रोटीएज जो होता है मॉडिफाई करने वाला प्रोटीन को, इंपॉर्टेंट है फॉर द एक्टिविटी ऑफ इंटीग्रेज ऑल्सो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ऑल्सो, एंड HIV रेप्लिकेशन. बाद में जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनेगा उसके लिए भी ये मैच्योरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, एंड वायरल इन्फेक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है. तो लार्ज इनएक्टिव प्रोटीन्स दे आर सिंथेसाइज्ड इन इन्फेक्टेड सेल which are then broken down into various active or small proteins by enzyme protease. Last stage of replication and maturation.
The protease inhibitors, they binds competitively with the HIV protease and blocks the viral maturation, and this lead to production of immature and non-infectious virus. इसकी ADME, absorption, distribution, metabolism, elimination. They are well absorbed orally except saquinavir is metabolized in the liver. Microsomal enzyme inhibitor होता है ये. एडवर्स ड्रग रिएक्शन है ना, बाद में देखेंगे आप, एक टेबल दिया है आपने. इसकी यूज क्या है? यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ HIV इन्फेक्शन अलोंग विद द अदर ड्रग. रिटोनाविर इनहिबिट द माइक्रोसोमल एंजाइम, मतलब कैन प्रोलॉन्ग द प्लाज्मा half life of other concurrently used drug. Then atazanavir, indinavir, nelfinavir, saquinavir, ritonavir, lopinavir, darunavir, they are the protease inhibitor, not used as a monotherapy because development of resistance. Protease inhibitor, they are not used as a monotherapy drug. एक ही ड्रग यूज नहीं करना है, कॉम्बिनेशन यूज करना है. So that's why used in the combination to prevent the resistance, right? Other drugs, so other drug देखो, enfoviratide. Enfoviratide is a new drug used in the AIDS which prevent the binding of virus to the cell membrane by blocking the entry of virus. It is an add-on drug for the patient who are not responding to other drugs in HIV-1. Enfoviratide, miraviroc. Now integrase inhibitor, next class है आपका integrase inhibitor. ये क्या करेंगे? They will prevent the mixing of or integration or combination of viral DNA to the host DNA. So HIV integrase enzyme is responsive, is already present in the virus along with the genomic RNA, which enters into the cell after infection. After HIV, proviral DNA is transcripted in cytoplasm. This enzyme causes translocation of proviral DNA from cytosol to nucleus and causes the integration of proviral DNA with the host DNA. This causes the infection of cell permanently. मतलब ये इंटीग्रेज एंजाइम जो वायरस में होता है ना, वो अपने आरएनए के साथ में होता है. जैसे वायरस अंदर गया, आरएनए रिलीज होगा, इंटीग्रेज रिलीज होगा, और इंटीग्रेज क्या करता है, बाद में आरएनए का जो डीएनए बनता है वो डीएनए को साइटोप्लाज्म से लेके न्यूक्लियस में जाता है ना, तो वहाँ पे न्यूक्लियस में आपका होस्ट सेल का जो डीएनए है उसके साथ में मिक्सअप कर देता है. दैट इज नोन एज इंटीग्रेशन. दिस कॉजेज द इन्फेक्शन ऑफ सेल permanently. Integrase enzyme provides important targets. Integrase enzyme क्या है? It is one of the important target for antiretroviral drug. तो इसमें ड्रग कौन से आता है? एग्जाम्पल है रेल्टाग्राविर. रेल्टाग्राविर, the first integrase inhibitor available for the treatment of HIV for both HIV1 and 2. It prevents the DNA and it prevents the host DNA to be integrated with the viral DNA. तो host DNA और viral DNA का integration नहीं होने and stop the viral cycle. Rapidly clears the HIV virus RNA from the circulation, increases the CD4 cell count. It forms a complexes with the magnesium, calcium, that's why that should be avoided. Next होता है dolutegravir. Dolutegravir is second generation integrase inhibitor. ये याद रखो, dolutegravir is a second generation integrase inhibitor. रेल्टाग्राविर क्या है? फर्स्ट है ना, यूजफुल इन द रेल्टाग्राविर रेजिस्टेंस, यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन विद द टू ड्रग ऑफ न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर. अदर प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू रेल्टाग्राविर. एंट्री और फ्यूजन इनहिबिटर, एंट्री इनहिबिटर और फ्यूजन इनहिबिटर. एनफोवायराटाइड, enfoviratide is synthetic peptide developed from HIV virus only. Enfoviratide is क्या है? एक पेप्टाइड है, synthetic peptide developed from HIV only. Selectively binds to the HIV1 envelope transmembrane glycoprotein known as GP41. तो HIV का जो ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन होता है GP41 उसको बाइंड करता है, which is involved in the fusion of particle with the cell membrane. तो ये GP41 ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो उसका काम होता है कि दैट इज इन्वॉल्व इन द फ्यूजन ऑफ दैट वायरस टू द होस्ट सेल, है ना, तो उसको इनहिबिट करता है ये. Therefore, enfoviratide prevents the entry
or fusion of virus to the host cell. No cross resistance to the other class. It is add-on drug for a multi-drug resistance HIV/AIDS. Adverse drug reaction क्या है इसके? Nodule or cyst or local pain at the site of injection. Next class है last वाला chemokine receptor 5. Chemokine receptor 5 inhibitor. Chemokine receptor 5 inhibitor. So chemokine receptor, most of the HIV has a CCR5. That's why they are known as CCR5 topic. Most of the HIV virus में CCR5 ये होता है. So most of the HIV virus are CCR5 topic. It is a globular protein GP120 of the HIV envelope, which will anchor to the CD4 cell. CD4 cell site और HIV virus को फ्यूजन करने के लिए ये दो इम्पोर्टेंट है. होस्ट सेल now by binding to a cell membrane to receptor. मतलब क्या कि कीमोकाइन रिसेप्टर हेल्प करता है, जिससे अटैचमेंट होता है वायरस का होस्ट सेल के साथ में. वो कीमोकाइन रिसेप्टर उसको फ्यूजन और पेनिट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो उसको इनहिबिट करने वाले ड्रग क्या करेंगे, फिर वही पेनिट्रेशन नहीं होने देंगे. सो मेरा वायरॉक इज नोवेल एंटी HIV ड्रग. इसका एग्जांपल क्या है, मेरा वायरॉक which targets host cell CCR5 receptor and blocks it, therefore prevent the entry and further integration steps of virus. The drug decreases the HIV RNA load and improves the CD4 count. याद रखना है आपको mechanisms. Now adverse drug reactions, adverse effect of nucleotide reverse transcriptase inhibitor. Particular drug के adverse effect क्या है ना. This is zidovudine. Zidovudine के adverse effect क्या है, bone marrow suppression, myelosuppression, insomnia, nausea, headache. Diadenosine का adverse effect है pancreatitis, peripheral neuropathy, diarrhea and hyperuricemia. Stavudine peripheral neuropathy करेगा, stomatitis करेगा. Zalcitabine peripheral neuropathy, stomatitis, pancreatitis. Lamivudine headache and nausea. Abacavir hypersensitivity reaction. Now adverse reactions of protease inhibitor. Protease inhibitor में कौन है, ये sequinavir. Sequinavir will cause GIT disturbances. Ritonavir GIT disturbances टेस्ट का अल्टर करेगा, पेरिफेरल पैरास्थेशिया नर्व का, raised triglycerides and cholesterol of your serum. Indanavir पिस्टोल्यूरिया, नेफ्रोलिथियासिस मतलब किडनी स्टोन, nephrolithiasis. So to take up plenty of water, that is advised to the patient. Alopecia, dry skin, GIT disturbances and increase the bilirubin level. Nalfanavir डायरिया करता है, इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को एंड लिपिड को. Amprenavir GIT disturbances, rash, increase the blood glucose level. Lopinavir GIT disturbances, increase the serum lipid. Now इनके केमिस्ट्री में ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको एक दिखाना है इसलिए दिखा रहा हूँ. बस यहाँ पे आपको आईपैक नेम एक बार पूछा है एसाइक्लोविर का, तो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड एनालॉग, दैट इज एग्जांपल है ना. सो एसाइक्लोविर, गैनसाइक्लोविर, वैलगैनसाइक्लोविर, लाइक दिस. एसाइक्लोविर का स्ट्रक्चर है आपको यहाँ पे, एसाइक्लोविर का स्ट्रक्चर. So it is a 2 amino. Two amino one, two, three, four. तो ऐसा नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 and 7 8 9. 2 amino 9 into 2 hydroxy ethoxy methyl 9 into 2 amino 9 into क्या है ये 9 into 2 hydroxy ethoxy methyl 1 hydropurine 6 1 purine 6 1. That is the IUPAC name of acyclovir.
वैसे गैन साइक्लोइड का एक आइटोक नेम करके रखो बाकी है 2 अमाइनो 9×13 डाइहाइड्रोप्रोपेन 2 यील्ड मिथाइल 1 हाइड्रोक्सीप्यूरिन 6,1 दैट इज अ गैन साइक्लोइड. बाकी just see the structure. So it is a structure of idoxuridine, structure of trifluoridine and pyrimidine 2,4-dione. दोनों पे क्या है pyrimidine 2,4-dione derivative. Structure of your amantadine and rimantadine. तो इसका स्ट्रक्चर एक बार पूछा है, स्ट्रक्चर ऑफ अमांटाडीन. तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, अमेंटन रिंग होता है ना, याद रखना है इसको. अमेंटाडीन एक बार पूछा है. देन स्ट्रक्चर ऑफ न्यू रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर कभी पूछा नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिए लैम्यूरिन, डायनोसिन, ज़ैलसिटाबिन, लिडोवोडिन. लाइकवाइज दैट आईपैक नेम भी यहाँ पे लिस्ट किया है मैंने, बट नॉट इम्पोर्टेंट. स्ट्रक्चर ऑफ डेलावेरिन एंड लो वायराइड है ना, रिटोनाविर, सकिनाविर एंड इंडानाविर. तो इसका आईपैक नेम वगैरह पूछा नहीं है कभी, और आपको नहीं आया, डोंट वरी. दिस विल एंड योर एंटीवायरल चैप्टर ऑल्सो. तो अभी आपका फार्माकोलॉजी ऑलमोस्ट हो चुका है ना, कंप्लीट है ना. और भी कुछ होगा तो अपन लेंगे. फ्रॉम टुमारो विल मूव टूवर्ड्स द फिजिकल फार्मेसी एंड इंडस्ट्रियल फार्मेसी. ठीक है, कुछ टेस्ट वगैरह अपडेट कर दूंगा.